Good morning, student. This video is about Class 5, Subject Science, Term 2 Syllabus, Chapter 2, Nervous System and Sense Organ. This is our lecture number 4. Today we are going to revise lesson number 4. Quick scroll. जल्दी से हम रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर नंबर 2. The nervous system is made up of the brain, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम कैसे बना होता है. नर्वस सिस्टम हमारे सारे एक्शंस को फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है. और नर्वस सिस्टम होता है जो वो किससे बना हुआ होता है, मिलकर ब्रेन से, स्पाइनल कोड से और नर्व से मिलकर बना हुआ होता है नर्वस सिस्टम. ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है. ये हमारे सारे एक्शंस को और फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरेब्रम एंड मेडुला. जो मेन पार्ट है ब्रेन के वो 3 होते हैं. 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है. जो हमारा ब्रेन होता है, सेरेब्रम एंड मेडुला. बिग ब्रेन, स्मॉल ब्रेन, है ना. और मेडुला जो होता है वो हमारी स्पाइनल कोड उसी से आगे स्टार्ट होती है, कंटिन्यू करती है मेडुला को ही, ठीक है. नर्व्स आर एन इनक्लोज्ड केबल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन. नर्व्स क्या होती हैं? केबल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं एक्सोन की, ठीक है बेटा. जो हमारी एक्सोन्स होती हैं उनकी केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नर्व्स होती हैं. हमने इसकी नर्व जो नर्व्स की केबल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसका डायग्राम भी देखा था. Next is the messages passed from outside through sense organs to spinal cord and then to brain. जो मैसेज होते हैं वो पास किए जाते हैं फ्रॉम आउटसाइड थ्रू सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल. बाहर से सेंस ऑर्गन्स के पास और उसके बाद सेंस ऑर्गन उन्हें स्पाइनल कोड और फिर वो ब्रेन को मैसेज पास करते हैं. स्पाइनल कोड हेल्प्स इन इमरजेंसी और ऑटोमेटिक एक्शंस. हमने रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में पढ़ा था. रिफ्लेक्स एक्शन कोई भी हमारी ऐसी सिचुएशन जो इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें इमरजेंसी आपको एक्शन लेना पड़ता है, तो वो मैसेज ब्रेन तक ना जाकर वो किसके द्वारा ही कंट्रोल होता है, स्पाइनल कोड के द्वारा ही कंट्रोल होता है. और उससे ऑटोमेटिक एक्शन स्पाइनल कोड ही कर देती है, ठीक है. तो जो स्पाइनल कोड है वो रिफ्लेक्स एक्शन देने में हमारी हेल्प करती है. जो भी इमरजेंसी और ऑटोमेटिक एक्शंस की ज़रूरत होती है वो कौन कंट्रोल करती है? स्पाइनल कोड ही कंट्रोल करती है. सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग. और जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं वो सराउंडिंग हमारे आसपास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं वो और आगे हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में हमारे हेल्प करती हैं. द सेंस ऑर्गन्स आर ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन. और जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है वो क्या हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड द स्किन. वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल सेंस ऑर्गन्स. हमें सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स की टेक केयर करनी चाहिए. हमने लेक्चर्स में पढ़ा भी था कि कौन सा सेंस ऑर्गन क्या कहलाता है, कैसे हमें उसकी टेक केयर करनी चाहिए. जैसे आईज है, विजन ऑफ ऑर्गन है. ईयर है, हियरिंग ऑफ ऑर्गन है, ठीक है. नोज, स्मेलिंग ऑर्गन है.
टंग टेस्टिंग ऑर्गन है, स्किन टचिंग ऑर्गन है, हमें इनकी कैसे केयर करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए। आइज़ में हमें जब भी हम फेस धोते हैं तो हमें आइज़ को क्लीन करना चाहिए, ईयर में पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं करना चाहिए। नोज़ को क्लीन रखना चाहिए, जब भी आप फेस वॉश करते हो तो अपना नोज़ ब्लो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका नोज़ ब्लॉक हो जाए तो उसको नोज़ल ड्रॉप्स डालकर ओपन करना चाहिए। हमें टंग का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सारे टेस्ट वर्ड टंग में होते हैं, टेस्ट आता है टंग से हमें, तो हमें कुछ भी बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए। स्किन पे अगर कोई भी छोटे मोटे घाव लग जाते हैं तो हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, ठीक है। और अगर बड़ा कोई घाव है या बड़ी चोट है तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। हमें अपने सारे सेंस ऑर्गन का, हमें पूरी बॉडी की टेक केयर करनी चाहिए और हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। नाउ बेटा, today's homework. Today homework is homework assignment. Question number 1. Tick the correct answer. आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। Number 1. One of the following is an odd one. It is mixed nerve, neuron, lung, brain. I repeat, one of the following is an odd one. It is dash. Number A, mixed nerve. Number B, neuron. Number C, lung. Number D, brain. Number 2. Which one of the following does not belong to the brain? Cerebrum, cerebellum, medulla, rectina. I repeat, which one of the following does not belong to the brain? Number A, cerebrum. Number B, cerebellum. Number C, medulla. Number D, rectina. Number 3. Which of the following nerves belongs to the eyes? Auditory nerve, optic nerve, olfactory nerve, motor nerve. I repeat, which of the following nerves belongs to the eye? Number A, auditory nerve. Number B, optic nerve. Number C, olfactory nerve. Number D, motor nerve. Number 4. Which of the following body organs helps in maintaining body balance? Cerebellum, cerebellum, medulla, spinal cord. I repeat, which of the following body organs help in maintaining body balance? Number A, cerebellum, cerebrum, medulla, spinal cord. Number 5. Leprosy is a dash disease. Number A, nose. Number B, eyes. Number C, skin. Number D, ear. I repeat, leprosy is a dash disease. Number A, nose. Number B, eye. Number C, skin. Number D, ear. Now next question is fill in the blanks. Number 1, the longest cell of our body is dash. आपको ब्लैंक में करेक्ट वर्ड से इसको फिल करना है। I repeat, the longest
cell of our body is dash. Number 2, big brain is also known as dash. I repeat, big brain is also known as dash. Number 3, the bulb-like structure of the brain is known as dash. I repeat, the bulb-like structure of the brain is known as dash. Number 4, dash nerve is found in ears. Dash nerve is found in ears. Number 5, the nerves that carries information from the nose to brain is dash. Number 5, the nerve that carries information from the nose to brain is dash. Next question is question number C. Match the following columns. आपको नीचे जो कॉलम्स हैं उनको मैच करना है, एक दूसरे से मिलाना है, ठीक है, कि किस पार्ट में क्या चीज क्या फंक्शन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड कॉलम 1 रीड कर रही हूँ मैं. सेरेब्रम, cerebrum, spinal cord, eye, tongue. I'm going to read again. Cerebrum, spinal cord, eye, tongue. Now, column 2 is A. Taste buds, B. reflex action, number C. Ridges and fro, number D. cornea, number E. small brain. I repeat, number A. taste buds, number B. reflex actions, number C. ridge and froze, number D. cornea, number E. small brain. Now next question number D. ड्रॉ एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स. आपको ये 2 डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं और उनको लेबल करना है, बताना है कौन सा पार्ट है. ये दोनों डायग्राम मैंने आपको लेक्चर्स में शो किए हैं. बनाना आई का तो मैंने आपको एक इजी डायग्राम भी शो किया था कि उससे आप इजीली डायग्राम बना सकते हो. न्यूरॉन्स का इजी है बहुत डायग्राम बनाना, ठीक है. एक न्यूरॉन और एक स्ट्रक्चर ऑफ आई, दोनों को आपको एक अलग अलग पेजेस पे बनाना है, नोटबुक में ही बनाना है. डोंट टेक एनी अनदर शीट, नोटबुक में ही बनाना है आपको, ठीक है, और उनको लेबल करना है. नाउ बेटा इट्स टाइम फॉर होमवर्क सॉल्यूशन. क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस टर्म 2 चैप्टर 2 nervous system and sense organs. This is our lecture number 3 homework solution. Our homework was 2 question answers. 2 क्वेश्चन मैम ने आपको दिए थे. क्वेश्चन नंबर 5, how does nose help in trapping the dust particles? और क्वेश्चन नंबर 6, explain the functions of the tongue in tasting any food item. So, question number 5. How does nose help in trapping the dust particles? The hair inside the nose helps us in trapping and filtering the unwanted particles or dust from the air we breathe in. जो नोज़ के हेयर होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं ट्रैप या फिल्टर करने में जो वांटेड पार्टिकल्स होते हैं डस्ट में जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं तब. आई रिपीट, द हेयर इनसाइड द नोज
helps us in trapping and filtering the unwanted particles of dust from the air we breathe in. Next, explain the functions of the tongue in tasting any food item. Answer is tongue have different areas on it for tasting different foods. Their areas consist of small birds called taste buds. The food and saliva enter into these birds, which in turn pass the information about the taste to the brain through a sensory service. जो टंग होती है उसमें डिफरेंट एरियाज होते हैं जो डिफरेंट टाइप के फूड को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, इन एरियाज में स्मॉल बर्ड्स होते हैं जिन्हें टेस्ट बर्ड बोला जाता है। जब फूड और सलाइवा इन बर्ड्स में एंटर करता है तो वो जो बर्ड्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं हमारे ब्रेन तक उस टेस्ट की। ठीक है, थ्रू सेंसरी सर्विस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जो टेस्ट होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पास करते हैं। बेटा, if you have any query in this lecture, you can ask me through email ID. I have shared my email ID with you. You can send a mail on my email ID. Okay, beta. Or you have my WhatsApp number also. You can send text message on my WhatsApp number also. I will reply as soon as possible. Please avoid to video call or audio call. If it is emergency, then you can call me also. Okay, beta. And while sending your homework solution, please write your name, class, roll number, section, and your father's name. Okay, beta. Bye bye. Be happy. Have a nice day. Bye bye.